Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on Kurukshetra monthly compilation and I'll be discussing Kurukshetra for the month of May. For this month, the journal focuses upon rural connectivity, and rural connectivity is a topic which is important for civil services mains examination, essay paper, and also it will contribute in your prelims paper. So what I'll be doing in this session, I have already segregated the topics as per the general studies requirement. So the topics have been segregated under General Studies Paper 2 and General Studies Paper 3. So some important article under General Studies Paper 2 include PM GSY, changing nature of India's rural road, and second is transforming the rural connectivity. In terms of General Studies Paper 3, the first important article is socio-economic development of national highway and again the railway connectivity. So I'll be discussing each and every topic one by one. Before that, if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination, do not forget to press a like button. So we'll be moving with General Studies Paper 2 first. So let's see what are the important articles that is under General Studies Paper 2. The first is PM GSY, changing the nature of India's rural road. So under this, some of the basic facts you need to know that India is one of the largest road network in the world with a total of 3.3 million kilometer. Again, factually important. This type of fodder point will help you to write in mains paper. Now, India accounts for 69% of population in rural area with prime occupations of rural population and cultivation, agriculture labor, rural artisan, retail business and small services. तो जो occupation है diverted है in particular sectors. The large size and the share of the rural population essentially required all round of development, specifically ऐसी development जो rural infrastructure को cater करती है. In late 2000, the government has launched National Rural Road Program, जिसको बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से भी जाना गया. It aims to improve the rural connectivity in a systematic manner. And just to give you a brief about this program, this has transformed the Indian highway. Right? बहुत ही commendable काम की गई इसमें. Although corruption was also reported, but to a larger extent, this program has helped to connect the rural India. Right? And rural road is a state subject. इस तरह के सवाल आपके prelims में polity point of view से भी important. Now, road network in India की अगर बात करें, basically the total road length in the country has increased impressively to 3.99 lakh kilometer और ये आगे बढ़ के almost 63.71 lakh kilometer हो चुके हैं. और इसमें अगर इस road के development में growth की बात करें, this is with the growth rate of 4.2%. Now the percentage of surface road length for the total roadway was 64.65% in 2019. Share of rural road was highest, that is 71.27%, followed by district road. ये आपके prelims के लिए भी important है. Those of you who have geography as optional, make sure you take a note of this. तो share of rural road की बात करें तो highest है 71.2% rural road. उसके बाद district roads की बात करें 9.94%, urban road 8.85%, state highway जो है वो 2.82% कंट्रीब्यूट करती हैं एंड नेशनल हाईवेज 2.08% इन द टोटल रोड नेटवर्क. तो सबसे ज़्यादा जो रोड्स है वो रूरल रोड है. इवन दिस इज नोशन दैट पीपल फील कि हाईवे जो नेशनल हाईवे वो सबसे ज़्यादा है. दिस इज नॉट ट्रू. रूरल रोड इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू 71.27%. Now, need of rural connectivity. अगर बात करें आज के modern transformations में, rural road is something that is very important, and even the rural urban transportation and connectivity is a landmark journey to achieve the overall success. The occupations of rural road will become viable, profitable, and acceptable once we have all-weather connectivity. So, recent times गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि जो रोड की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो. Even for the National Highway Authority of India and Ministry of Road and Transport has used some of the most advanced technology that can use under their ministry, right? तो बहुत सारे ऐसे technologies हैं जो incorporate भी किए गए. Improved transportation network help in connectivity market with smooth and timely transaction of commodity and services.
एक गुड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी रोड होती है जो कि हर एक एरिया को सेमी अर्बन एरिया से भी कनेक्ट करती है, एंड इवन द क्विक फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड सर्विसेज, जो डिमांड आ रही है मार्केट से, जो डिमांड सप्लाई है, उसको बनाए रखने में एक रोड का बहुत ही अहम रोल है, राइट? So if you're writing in mains paper, try to cover the dimension of the road and its advantages. So it ensures the competitive advantages in improving the inventory, storage, supply chain and operational management. आप operation management भी logistics के part को ले सकते हैं. Now, PMGSY as a all-weather road connectivity, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana as a part of poverty reduction strategy by the government of India was implemented in 2000. So this actually started way back in 2000, and this was conceived that one-time special intervention would be required for a single all-weather road connectivity in habitations, and this would be helping for the size of 500 plus in the plain areas. Now, special focus government ने की है कुछ states पे, which include अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड. उसके अलावा जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं शेड्यूल 5 के अंदर आती हैं ट्राइबल एरियाज में, एंड इवन फॉर द सिलेक्टेड ट्राइबल एरिया एंड द बैकवर्ड एरिया. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has aimed to connect the eligible unconnected habitations, right, which is somewhere under the jurisdiction of Ministry of Home Affairs. Now, the scheme allowed the upgradations and updations of existing road जो कि डिस्ट्रिक्ट में है उसको एलिजिबल हैबिटेशंस के साथ कनेक्ट किया जाए, मास पॉपुलेशंस को रूरल रोड के साथ कनेक्ट किया जा सके ताकि उनकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके in terms of getting an all weather connected road. Now, use of green technology, as I've told you, that government has come up with all sort of new technology that is there in today's generation. तो PMGSY के अंदर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती हैं, उनको रूरल रोड के कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज की गई है. लोकली अवेलेबल मटेरियल आर बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन टू प्रमोट cost effective and fast construction, right? So under the phase 3, the state and union territories are mandatorily constructing the road without a plastic way, right? जो कि जिसकी within 15% of total length जो prescribed है वो नई टेक्नोलॉजी से बनेगी. इसका पूरा मेन एम है, what is the main aim for the modern technology in the rural construction? First is to ensure a safe environment. Second, to reduce overall expenditure without compromising on the quality. Third, prolong lifespan road. And fourth is ensuring the road safety among others. So this is how it is actually helping in building a good infrastructure of road. Issues और challenges भी हैं इनके construction में. So first is insufficient fund with the state for rural structure or rural road, unpredictable fund for the rural road, inadequate maintenance of rural road by many states due to limited fund. तो फंड और फाइनेंसेस एक सबसे बड़ी बॉटल लिंक है कंस्ट्रक्शंस के लिए भी और उसके मेंटेनेंस के लिए भी. Inadequate maintenance in the major district road resulting in the pressure from the rural roads. Quality and specific program not strictly adheres to the standard. And last but not the least is the layer of informal subcontracting cost of the quality. Now moving to the other topic, that is transforming the rural connectivity. As the journal focuses upon rural connectivity, तो आज के जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही मिलेंगे, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3. स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्शन मेंशन है, डू चेक इट आउट. So rural connectivity, both physical and digital, was a development priority for India even before the COVID-19, and it is indispensable because ये एक ऐसी ग्रोथ है या ऐसी एक एरिया है जहाँ की डेवलपमेंट मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए. So rural connectivity provide an enabling environment for improvement in livelihood, employment, education and healthcare. So once a rural connectivity is there, ये सारे जो problems हैं जिनकी इम्प्रूवमेंट करनी है वो एक सिंगल काम से आप 2-3-4 चीज को एक साथ कर सकते हो. So this is like with one arrow you can get 4 or 5 things done. So since independence, India has made tremendous progress in the rural connectivity. और जो बात की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत नेट इनिशिएटिव, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिन्होंने जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है रूरल इंडिया को. नाउ इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड, इसकी क्या इम्पैक्ट हुई है एक्चुअल में लाइवलीहुड पे. सो इट हैज़ इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को एक स्टिमुलस मिली है, एंड इवन इट हैज़ प्रोवाइडेड एन एंटरप्रेन्योरियलशिप for the local communities. It has ensured the local communities that are
reliable to get outside products, services, information and social linkages. तो एक सामान को दूसरे सामान तक भेजने में, and even for the connectivity, this has helped a lot. It has also enabled the community for fully access to existing government scheme, program and services. और उसके साथ साथ access to good quality infrastructure. Even internet is very crucial for rural youth in terms of businesses, in terms of education. तो भारत नेट जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं. Better connectivity and accessibility has played a crucial role in micro enterprises and operating with the value chain. So it has not helped to some segment, but ये एक पूरी hierarchy है from bottom to top where it has actually helped. Now, engaging the local institution is again a very significant. So, rural connectivity program require a robust services enterprises framework जहाँ पे public और private दोनों की participation काफ़ी important है. So, government has come up with vibrant 4P model. If you're writing in mains, make sure you highlight this. तो 4P मॉडल का मतलब है पब्लिक, प्राइवेट, पंचायत, पार्टनरशिप. अगर ट्रिपल पी होती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, बट अगर रूरल डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ पे 4P काम करती है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड पंचायत पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट. नाउ विद नैरो लूप साइड विजन इज फॉर एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स की कंसिडरेशन ली गई और रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंगेजमेंट किया गया ताकि रोड के जो डेवलपमेंट है, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाया जाए. मॉनिटरिंग द सर्विसेज डिलीवरी बाय द एक्सटेंशन ऑफ द एजेंसीज. Now, Gram Panchayat Development Plan की अगर बात करें, this is also known as GPDP. So it could also be effectively mainstream the rural connectivity, including the funding internet connectivity, which is through the BharatNet. और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने और भी ऐसे स्कीम, भारत नेट से पहले भी बेसिकली और ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इनरोल की. Availability of adequate funding, training, capacity development, and concerns of the robust inclusive rural program is something which is evident and actually has helped to a lot more in the rural populations, right? So BharatNet and even basically the dot programs, these has actually helped the government of India and even to get the connectivity done, right? तो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो कनेक्टिविटी दी जा रही है, इससे पहले भी और ऐसे स्कीम्स दूसरे गवर्नमेंट के टाइम में भी रहे हैं. Now, it also includes the necessity comprehensive public investment, which include rural infrastructure, including the improved road connectivity, development of rural human capital, ensuring opportunities in education, healthcare और cultural development. उसके अलावा internet connectivity मैंने आपको बताई, that provide rural population opportunity to make new technology and dependent on digital platform. ये health में, education में और बहुत सारे services में help करती है. Now, some article that is relevant for your general studies paper 3. The first is socio-economic impact of national highway. इसके socio-economic impact के हैं, किस किस तरह से ये advantages करती है. So for economic development for any country, road and national highway is mandatory. This is inevitable and its development is a mandatory requirement. So improve road infrastructure not only increase the growth but also it ensure for inclusiveness and sustainability. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रमोट होती है. द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च टू एक्सपीडिट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल रोड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. तो इस तरह के स्कीम्स आप एग्जाम में ज़रूर हाईलाइट करें, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की अगर बात करें, द हाईवे आर द वन मोस्ट important in communication of this, and generally the development of highway create an impact on the life of the people and also for the people who are living in the rural proximity. District impact kya hai? It has enhanced the spatial connectivity which increase the mobile freight even for the reductions of the cost of provisions as well as cost for the use of road infrastructure. Advantages of highway development, basically it has helped a lot of section of the society, but specifically one of the most important implication is the development of highways. जो रूरल चेंज है, जो लैंड के जो पैटर्न की जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट हुई है. इवन द न्यू लैंड पैटर्न हैज इंड्यूस डेवलपमेंट इन द हाईवे विच क्रिएट्स मोर प्रोविजन फॉर द नॉन फार्म सेक्टर डेवलपमेंट. इस नॉन फार्म डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है? दैट इज़ द जॉब मार्केट, health and education facilities, attract investments, feeder roads, power distribution network, and telecommunication facilities. Now, this development tend to change the pattern of economic activities. Income generations होंगी, price की evolution हो रही है, employment conditions बढ़ रहे हैं,
वैसे रूरल एरिया के जो प्रॉक्सिमिटी एरिया में, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जो रूरल एरिया के कनेक्टिविटी के जितने नज़दीक है. बाय द वर्ड प्रॉक्सिमिटी इट मीन हाउ नियर इट इज, राइट. Now, current status and policy paradigm in economy spending on infrastructure, it create a multiplier effect on the creation of additional income. The capital expenditure has a direct link with spending on creating a new infrastructure. In the last 60 years of development of the highway has increased to manifold in India. Now, the current policy paradigm has also increased the economic development through the physical infrastructure like road and highways. Now, the initiation of PM Gati has also led to the development of physical infrastructure, जो कि इस बार के करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस भी किया हुआ है. एंड द एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 28 किलोमीटर हैज इंक्रीज टू 36.5 किलोमीटर्स, और ये 30.4% तक की ग्रोथ देखी गई है. The total expenditure by the Ministry of Road and Transport has also increased to 1,18,101 crore rupees. Now, भारतमाला प्रोग्राम अगेन वेरी सिग्निफिकेंट. इस स्कीम के थ्रू जो लार्जर पार्ट ऑफ ग्रैंड एरियाज को कनेक्ट की गई है. दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 2017 अंडर द भारतमाला परियोजना स्कीम, एंड द भारतमाला परियोजना इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द प्रोग्राम हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज एज इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम. तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में लिखे तो पीएम गति के साथ आप भारतमाला प्रोग्राम्स को जरूर एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे. The program aims to develop 34,800 km of national highway corridor connecting 600 plus districts in a nation. And Bharatmala Pariyojana focus on development of 2,400 km dedicated to expressway, access control economic corridor, associated feeder routes, coastal and port connectivity, broader and internet connectivity corridors. Now the other topic, that is rail connectivity or railway connectivity. So India's rail network is recognized as one of the largest railway system in the world under single management, and India has the fourth largest road network with over 22,593 operating train. जो daily passenger train है वो 24 million के आसपास है, and even the freight train is amount to 203.88 million tons. जो रेलवे नेटवर्क है that is also an ideal long distance travel movement for bulk of the commodities, apart from being energy efficient, इकोनॉमिक मोड पे लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी होती है ट्रैवल करना, एंड इवन इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. इंडियन रेलवेज प्रेफर्ड एज अ कैरियर ऑफ ऑटोमोबाइल फॉर आवर कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंट यूज, एंड इवन इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली. ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो अटेनमेंट ऑफ रीजनल या बैलेंस डेवलपमेंट की बात हो. स्पेशली जो रूरल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फास्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पेपर, सो मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ दिस. So first is the creation of employment. Again is the other is the enhancing connectivity. Connectivity वो enhance हो रही है. Third is improving the accessibility, increasing the production and facilitate trade and commerce in overall consideration as an engine of progress, growth and national integration. So these are some of the multiplier effect of the transport infrastructure. Now growth and trend in the Indian Railways. So Indian Railways has witnessed a paradigm shift in focus towards a new technology, customer service enhancement and efficient passenger operations. Now it is projected that by 2050 India will account for 40% of the global share in the rail connectivity, and even investment that is required is 50 lakh crore rupees, right? So this is the total value anticipated for the railway growth. The government has also opened public-private partnership mode for support of the private sectors. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेन हैं भारत वंदे भारत में एक्सप्रेस और ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेन स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोलैबोरेशन है. फॉर इंडिया द फ्राइट रिमेन्स क्लोज टू द मेजर रेवेन्यू. 65% जो रेवेन्यू है वो फ्राइट कॉरिडोर से ही आती है, ट्रेन से आती है. इवन द रेवेन्यू जनरेशन फॉर वॉज इंक्रीज बाय 35% विच इज अकाउंटेड फॉर द पैसेंजर सेगमेंट. तो कंपैरेटिवली पैसेंजर सेगमेंट से कम है और फ्राइट के सेगमेंट से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. नाउ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की अगर बात करें, डीएफसी प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है. कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, उनको कनेक्ट किया गया है. प्रेजेंटली जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है दैट अकाउंट फॉर 16% ऑफ द टोटल रूट लेंथ,
which has over 58% of the freight tariff and 52% of the passenger tariff. World Bank ने assistance दी है almost 124.53 billion की for the Eastern dedicated freight corridor, which is again a Japan international agency providing 387.22 billion for the Western dedicated freight corridors. Now PM गति शक्ति एक बहुत ही अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पे. The PM Gati Shakti is a transporting approach for 7 engines, जहाँ पे namely road, railway, port, airport, waterways, mass transportation, logistic infrastructure, ये सारी चीज़ों पे development हो रही है. It helps to develop a world-class modern infrastructure and logistic to provide a multimodal integration, seamless connectivity for uh, people, good roads and services. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 km of rail network will be bound under the Kavach, which is indigenously developed for anti-collisions and world-class technology to prevent the accident. तो कवच एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की which helps the train to achieve the goal of zero accident. And although in the recent time we have seen the number of train accident declining in our country because of the technology upgradations. Now, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इंडियन रेलवे में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ली गई हैं लाइक announcing and the information that train approaching different status with air condition and temperature control. So this is again a technological advancement. And in 2023, Indian Railway planned to manufacture almost 8,429 train coaches, which rank include 75 Vande Bharat Express, Tejas Express, and Vista Dome coaches. So these are some of the advanced coaches which is also being made by the collaborations of public-private partnership. किसान रेल और रूरल अपलिफ्टमेंट की बात करें, किसान रेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि किसानों के लिए, जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प की. इट इज़ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द फ्रेट बिजनेसेस एंड प्रोवाइड पुश टू फार्मर इन पर्टिकुलर. जो किसान रेल है दैट हैज़ प्रोवाइडेड 50% सब्सिडी ऑन फ्राइट कॉरिडोर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जहाँ के हर एक फार्म प्रोडक्ट को बेसिकली सपोर्ट दिया जाए, हर एक जगह के हर स्टेशन पे एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. दिस इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच दैट गवर्नमेंट हैज कम अप विथ. रेलवे विल डेवलप न्यू प्रोडक्ट विद एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड इवन इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल रेलवे कनेक्टिविटी एंड सीमलेस कनेक्टिविटी. The government has announced plan to develop 100 PM Gati Shakti cargo terminal for the multimodal connectivity that will facilitate in the next 3 years. So this is how the Kisan Rail and Rural Upliftment will move forward for the development of farmer and holistic development of rural India. Now, Green Fuel Initiative, this is another one. Indian Railway aims to have achieved 100% of electrifications by 2023, reducing the carbon emission. We already have set a target for net zero emissions by 2070. So ये सारी चीजें help करेगी and this will make the first major railway in the world to be electrified with the broad gauge railway network in the size. And Indian Railway has adopted an environment friendly technology head on generation system जो कि सप्लाई करेगी पावर टू पैसेंजर कोचेस, एलिमिनेट रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेट पावर कार्स एंड इवन इट विल कटिंग डाउन द एनर्जी रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली. The Indian Railway aims to generate 20 gigawatts of renewable energy to solar wind and project is about to meet the annual requirement of 21 billion units. Connecting northeast and the binding district, again we cannot escape this topic because नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेन्स अगरतला से स्टार्ट की हैं कनेक्टिविटी के लिए. एंड इवन फॉर द इंटायर नेटवर्क नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशंस. असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश. In additional, Mission Hungry for Cargo initiative was also there, which starts targeting 45% of the multimodal freight and even 27%. The railway plans to even fund this line on its own, and that has shown on the delay. This will make not only the cheapest but also the convenient transport in this sector because for the hilly areas it is very important that इस तरह की connectivity ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो ताकि local population, farmers, education, healthcare सारे लोगों को इसका impact देखने को मिले. This was all about for the Kurukshetra. We have a lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis which I covered from two important newspapers from Hindu and Indian Express. IAS GAZETTE magazine आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. FCA, PIB, MPR, PRS की है और Gist of YOJNA at Kurukshetra. This all have been uploaded. So do check it out. Playlist के section में आपको सारी videos मिल जाएंगी. And even you want to download the compilation of YOJNA and Kurukshetra, you can also get from our website.
This was all about for the Kurukshetra compilation. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.